this masterclass not only help you understand, the CBSE pattern and the nitty-gritties of, uh, attempting MCQ based questions for term 1 examination. As we know that almost all the competitive exams are based out of MCQ patterns. So this masterclass will help you to attempt MCQ based questions with comfort, with ease. This will help you, understands the do's and don'ts of attempting MCQs, the nitty gritties of attempting MCQ based questions, and tips and tricks in case you need to, place some bet, or if you need to guess some, options out of 4 or 5 which are there in the question, how, perfectly, how, in a better way you can do that. So without further ado, I would like to introduce the resource person, the speaker of the day, Mr. Saad Hassan. He is a prominent face, a prominent personality at Vidyamandir classes. He is an MCQ expert. He is a BTech from NIT Jaipur, and has done masters in applied mathematics. He's a mathematics guru at BMC, and he has done MTech. This is masters in applied mathematics from North Carolina University, USA. So I request Saad sir to please apprise our students, parents about the nitty-gritties and basics of MCQs. Right. Yeah. Thank you, Vaibhav. But it so happens that, Vaibhav, perhaps that you will have to allow me to broadcast the video. I don't have such rights now. Yeah. Oh, just okay. Allow me. So please check. Can you? Yeah. Yes. Now I get it. Thank you so much. Yeah. So thank you, Vaibhav, and thank you for that very generous introduction. Good morning, everyone who's joined us and who will join us in due course of time. I'm hoping you're doing well, and I'm hoping that you're having a great Sunday. So let's add some value to our Sunday this day. Okay, I'm Saad Hassan. So brief introduction. As Vaibhav has already said, I did my BTech in electrical engineering, followed by a master's in applied mathematics from North Carolina State University. And I have been working with Vidyamandir classes for over about 5 years after returning from US. And I have worked with VMC in various capacities, the most recent one being briefing you about how to go about the MCQ examinations. Okay, right. So before we go and begin with the slides and presentation and that how do you go about these examinations, which you're going to do, of course, let me give you a brief overview of that, how this session is going to go about, right? So let's say that this session is going to be divided into 3 parts. The first part will deal with how do you fill your AMR sheet, because that's the first thing and that's the most fundamental thing. Despite doing everything correctly, if you fail to fill in the OMR sheet, the response sheet incorrectly, well, then you are in for bad luck. That's such a terrible fate to meet. We wouldn't like that to happen. Of course we wouldn't. That's one thing. The second thing is that the second thing that we will discuss is that we'll delve deeper into the nature of MCQ examinations. We'll try to form a very coherent strategy by which we can maximize the marks that we'll obtain in examination. We'll try to avoid the traps, the minefield that are generally set in the question paper. We'll try to avoid those as well. We'll try to see that can we have a strategy by which we can avoid those common mistakes which a student generally falls prey to. Yes, we have some of those tricks in our kitty as well. And the first part was that I have to apprise you that how do you in fact fill your OMR sheet. The third part is that it will be just an open round question and answer session. Like if you want to ask me about Olympiads. So I had the Olympiads division at Vidyamandir classes. Well, you can ask me about Olympiads. If you want to ask me about JEE, you can ask me about JEE. If you want to ask me about career in mathematical sciences, or a career in pure mathematics, or a career in applied mathematics, or career in mathematics,
Well, I'll be here to answer your questions. So should you have questions like those, Recording in progress. Should you have questions like those, make sure that you're here till the end of the session and you put up the relevant questions to me. And I am thoroughly convinced that we will be able to walk you through all the questions that you might have in your mind. And just so that everyone understands this session, so I'll try to be bilingual, right? Just कि सबको समझ में आ जाए बात, तो मैं bilingual होने की कोशिश करूँगा. Like I will speak in Hindi as well as I will speak in English, right? Okay. तो just मैं brief overview दे रहा था कि पहले 3 parts, इस session को 3 parts में divide किया है. एक part ये है कि that well, आप OMR sheet कैसे भरते हैं, that's very important, बहुत ही जरूरी है. नहीं अगर आपको ये पता है कि OMR sheet कैसे भरते हैं तो आपकी सारी मेहनत पे में प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट? इतना कुछ किया you don't get your worth. Second part is कि हम देखने वाले हैं कि आप एग्जामिनेशन कैसे अटेम्प्ट करते हैं, क्या स्ट्रैटेजीज हैं जिसको यूज करके आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं. दैट्स द सेकंड पार्ट. द थर्ड पार्ट इज दैट आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछता हूँ, लाइक जेई के बारे में, ओलंपियाड्स के बारे में, बिकॉज एज आई सेड दैट आई हेड द ओलंपियाड डिवीजन एट विद्यामंदिर क्लासेस. आपको मैथ्स के करियर के बारे में पूछना है, आप पूछ लीजिएगा. And stay with me till the end. तो आप मेरे साथ रुकिएगा लास्ट तक. If you have any question, any curiosity which you want to get an answer to, right? I'm here and I'll answer till the end. Okay, so without much further ado, let's begin. Like हम शुरू करते हैं. So first of all, I'm going to apprise you that how are you going to get your OMR sheet? आपको OMR sheet कैसे मिलने वाली है, and how is that going to look like to you? So Vaibhav, can you see my screen? Yes, sir. I can see. I can see it. I mean, it's visible. Great. And I just wanted to add few instructions to students. Students, this is a certified workshop, so we'll be giving away certificates to students who are attending this workshop completely. So आप certificate आपको मिलेगा इस workshop का, और अगर आप इसे completely attend करते हैं, so जो इसमें एक feedback आपको share किया जाएगा chat box में, so please उसको भरिएगा, और जिससे आपको certificate हम दे सकें इस workshop का. Thank you so much. Yeah. Okay, all right, thank you. So now let's get back to the first section is divided to how do you fill your OMR sheet. Like जो पहला section है उसमें हम ये discuss करने वाले हैं detail में कि आपकी OMR sheet आप कैसे भरने वाले हैं. Let me tell you something, that this OMR sheet is such an extraordinary piece of work and is quite novel on account of many factors. Like ये जो आप OMR sheet भरने वाले हैं बहुत ही extraordinary है, like बहुत ही अलग. In fact, I haven't seen such an OMR sheet before. Like मैंने ऐसे OMR sheet नहीं देखी है, and in fact I'm very much convinced that our generation of people haven't seen such an OMR sheet. जबकि हमने भी एग्जाम दिया OMR sheet पे, and बहुत सारे लोगों ने एग्जाम दिया, but ऐसी OMR sheet नहीं देखी हमने भी. Because why? You will get to know as we talk about it. This is so extensive. इतनी extensive OMR sheet है ना. What they have done is that they have been very meticulous and thorough in their preparation of this OMR sheet. Like उन लोगों ने जब ये OMR sheet बनाई होगी ना, तो बहुत ही शिद्दत के साथ बनाई है कि हर गलतियों को कवर करने का, आपने गलती कर दी तो उसको चांस देने का, ये अनफेयर मीन्स बचाने का, बहुत सारे एंगल्स को कवर करने की कोशिश की गई है, जो जनरली बच्चे एग्जाम्स में नहीं होता है. बच्चे एग्जाम्स में इतने सारे एंगल्स को कवर करने की कोशिश नहीं की जाती. एंड देयरफॉर जब आप ऐसा करते हैं तो दैट अटेम्प्ट इज, of course that's robust, but the point is that what's also true is that उस attempt में ये भी हो जाता है कि that it becomes very elaborate, right? So this OMR sheet is very elaborate, बहुत ही elaborate सी OMR sheet है, आप देखने वाले हैं थोड़ी देर में. So let me go to this. तो अब मैं जाता हूँ इस पे. That so the first instruction is that एक आपको OMR sheet की कॉपी दे दी जाएगी. That's fine. We'll come to point number 2. That's very important. वो ये कहता है कि the details of the candidate will be pre-filled in the OMR. तो जो candidate का detail है वो आपको pre-filled मिलेगा. It means that you don't have to fill in your name. आपको अपना नाम नहीं लिखना है उस पे. Okay? आपको अपना roll number नहीं लिखना पड़ेगा OMR sheet पे. आपको just बैठना पड़ेगा, OMR sheet कलेक्ट करनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा कि आपका नाम और आपके रोल नंबर जो है वो उस पे सही लिखे हुए हैं या नहीं सही लिखे हुए हैं. That's it, nothing else, right? तो बस आपको ये दो चीजें देखनी है, आपका नाम, आपका रोल नंबर क्या सही है तो ग्रेट, नहीं सही है तो
ठीक है, वो आपको फिर स्कूल अथॉरिटी से ही करना पड़ेगा। नो, डू यू सी हाउ एक्स्ट्राऑर्डिनरी इज दिस? आपको कुछ भी नहीं फिल करना, नाम नहीं फिल करना, रोल नंबर फिल नहीं करना, मतलब अपने से रिलेवेंट डिटेल्स फिल नहीं करना। ओके, ऐसा नहीं कुछ भी नहीं फिल करना, बट अपने से रिलेटेड डिटेल्स फिल नहीं करने। ओके, कम टू पॉइंट नंबर 3 ना। दो चीजें आपको यहाँ पे फिल करनी है, 2 पॉइंट्स, राइट, कीप दैट इन माइंड। दो चीजें आपको यहाँ पे फिल करनी है ओएमआर शीट में। फर्स्ट थिंग इज, पहली चीज है that which 3 says that आपको पेपर कोड फिल करना है। ओके, आपको एक क्वेश्चन पेपर मिलेगा, उस पे एक पेपर कोड लिखा हुआ होगा, उस पेपर कोड को आपको आपके ओएमआर शीट में फिल करना पड़ेगा। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जो पेपर कोड होगा ना, उसके करस्पॉन्डिंग ही कुछ ओएमआर शीट के रिस्पॉन्सेज आप डालने वाले हैं। अलग अलग पेपर कोड के रिस्पॉन्सेज अलग अलग होंगे, है ना। अच्छा, तो कहां पे आप पेपर कोड डालने वाले हैं? तो आई स्ट्रेट अवे गो टू दैट सेक्शन, सीधे से ओएमआर शीट पे जाता हूं। लुक एट दिस राइट हैंड टॉप, और जस्ट बिनीथ द बार कोड के नीचे देखिए, राइट हैंड पे टॉप में दिखता है आपको, ये लिखा हुआ है कि दैट राइट कोड नंबर रिटन ऑन द क्वेश्चन पेपर, और फिर लिखा हुआ है कि क्वेश्चन पेपर कोड, राइट। तो ये आपको लिखना पड़ेगा, जो क्वेश्चन पेपर पे लिखा है वो आपको ओएमआर शीट पे एग्जैक्टली वही चीज लिख देनी पड़ेगी, राइट। इज दैट ओके? Okay, now the 4 point says that this is very important. आपको अपनी हैंडराइटिंग में you have to sign a declaration followed by a self attestation, right? अपनी हैंडराइटिंग में आपको लिखना पड़ेगा कि भाई I confirm, मैं कंफर्म कर रहा हूं that all the particulars given above are correct. ये अपनी हैंडराइटिंग में लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको एक साइन करना पड़ेगा, राइट। ये कहां पे होगा? लुक एट दिस ओएमआर शीट, ये है, एंड लुक एट दिस बैक साइड ऑफ द ओएमआर शीट, ये देखिए। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि दैट अपनी हैंडराइटिंग में दैट आई कंफर्म दैट ऑल द पार्टिकल्स गिवन अबव आर करेक्ट। अच्छा, ये जो आप लिख रहे हैं आप ऐसे नहीं लिख देंगे। फर्स्ट यू विल हैव टू वेरीफाई ऑल द पार्टिकल्स व्हिच आर मेंशन्ड ऑन द ओएमआर शीट। मतलब जो ओएमआर शीट में आपके डिटेल्स भर रखे हैं इन्होंने, ये पहले आपको वेरीफाई करके ये लिखना पड़ेगा कि आपका नाम सही है, आपका रोल नंबर सही है, एंड सो ऑन। ओके, तो ये पर्टिकुलर्स देख के अगर सही सब मैच होता है, आप यहाँ पे ये लिख देंगे कि आई कंफर्म दैट ऑल द पर्टिकुलर्स आर करेक्ट, और फिर आप रनिंग हैंड में एक सिग्नेचर कर देंगे, है ना, लाइक अपना साइन कर देंगे। इज दैट ओके? ग्रेट, सो दैट्स पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 5 इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट आपको सिर्फ बॉल पेन यूज करना है, और वो या तो ब्लू कलर का होगा या फिर ब्लैक कलर का होगा। ओके, ओनली बॉल पेन, एंड या तो ब्लू या फिर ब्लैक। इज दैट ओके? राइट, यू कांट यूज, या तो आप जेल पेन यूज नहीं कर सकते, आप इंक पेन यूज नहीं कर सकते, एंड देयर इज अ गुड रीजन फॉर इट, राइट। इसके लिए एक अच्छा सा रीजन है, बिकॉज इट सो हैपेंस दैट द इंप्रेशंस लेफ्ट बाय maybe gel pen are not long lasting. जो इंप्रेशंस होते हैं ना, जो जेल पेन लगाते हैं, वो बहुत ज्यादा देर तक नहीं टिकते। आपको पता है ऑप्टिकल जो रिस्पॉन्स शीट है, ओएमआर जो है आपके पास, ये कैसे काम करती है? ऐसे काम करती है ना कि आपने किसी को डार्क कर दिया, अगर उस ऑप्शन को आपने सफिशिएंटली डार्क कर दिया है ना, तो उसके थ्रू लाइट नहीं पास होगी, और अगर लाइट नहीं पास होगी तो जो रीडर है वो ये रीड करेगा कि आपने ये ऑप्शन मार्क किया। ओके, बट सोचिए आपने कुछ ऐसे किसी ऐसी चीज से मार्क किया जिससे लाइट पास हो रही है अभी भी, तो आपका आंसर तो रजिस्टर ही नहीं होगा, राइट। सो दैट्स समथिंग दैट वी अवॉइड। ओके, सो आप क्या नहीं यूज करेंगे? आप ना यूज करेंगे जेल पेन, ना यूज करेंगे इंक पेन, इनफैक्ट आप सिर्फ यूज करेंगे बॉल पेन। ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप या तो ब्लू कलर का यूज करेंगे या ब्लैक कलर का यूज करेंगे, दैट्स इट। इन दोनों में से कोई एक यूज करेंगे। ओके, and they're very severe about not using a pencil. Like pencil ना use करने के लिए these people are very severe. In fact, in point number 6 में कहते हैं कि that not only pencil will not be used, but if a candidate is found using a pencil, then his or her examination stands cancelled, and a case will be launched against using unfair means. अगर आप पेंसिल यूज करते हैं तो आप पे एक केस भी कर दिया जाएगा अनफेयर मींस यूज करने के लिए। दे विल रजिस्टर एन एफआईआर। अब देखिए, दैट इट्स नॉट दैट दे हैव समथिंग अगेंस्ट दिस ग्रेफाइट इंडस्ट्री एंड दे आर मिलिटेटिंग अगेंस्ट इट। द आइडिया इज जस्ट टू not give people avenues to exercise using unfair means to get better results in examination, है ना। like idea ये है ना कि वो आप unfair means use ना करने दे। अब पेंसिल यूज करने से unfair means कैसे हो सकता है ना। what if you can collaborate with someone inside the school? अगर आप स्कूल के अंदर किसी से कोलैबोरेट करने लगे तो आपने कुछ आंसर मार्क कर दिया, वो ले जाएंगे और
रब करके करेक्ट आंसर्स मार्क करके दे देंगे, सबमिट कर देंगे, इट कैन बी डन। तो देयरफॉर दे वेरी स्ट्रिक्ट कि भाई पेंसिल यूज नहीं करना, और अगर आपने पेंसिल यूज कर लिया तो नॉट ओनली योर एग्जामिनेशन विल बी कैंसिल्ड, they will also launch an FIR in you, and I don't think that you're so eager to earn quite high laurels such early in your life. नहीं चाहेंगे आप ऐसा हो आपके साथ, right? तो पेंसिल बिल्कुल यूज नहीं करना, क्या यूज करना है, बॉल पॉइंट पेन, वो या ब्लैक कलर का होना चाहिए या फिर ब्लू कलर का। okay. I'm going to go to the next slide. मैं दूसरी स्लाइड पे जा रहा हूँ, right? Next slide is कि आपके OMR शीट में टोटल 60 क्वेश्चंस होंगे मार्क करने के लिए। ऐसा हो सकता है कि आपके सब्जेक्ट में 60 से कम क्वेश्चंस हो, ओके? आपके सब्जेक्ट में 60 से कम क्वेश्चंस हो सकते हैं, लेकिन आपकी OMR शीट में 60 क्वेश्चंस को मार्क करने का स्पेस होगा। इज दैट ओके? यस, ये बात क्लियर है? आप जो है, अगर आपको 45 क्वेश्चंस मार्क करने हैं तो आप 45 ही क्वेश्चंस मार्क करना। अगर आपने 46 क्वेश्चन मार्क किया, then they are not going to accept your 46 response. तो आपके 46 रिस्पॉन्स को वो एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं। That's 7.2. Okay? अगर 45 क्वेश्चंस है तो they will evaluate you in first 45 questions, और जो आप 46 रिस्पॉन्स मार्क करेंगे that will be not counted, वो काउंट नहीं करने वाले हैं, right? Okay. So now how do you mark response? नहीं, अब क्वेश्चन आ जाता है कि आप रिस्पॉन्स कैसे मार्क करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट दिस OMR शीट। आप इस OMR शीट को देखिए। There are few things that you should keep in your mind. कुछ चीजें हैं जो बिल्कुल आप ध्यान में रख लीजिए, that there is only one way to mark the correct answer. एक ही तरीका है करेक्ट आंसर मार्क करने का, and that's this. अगर आप इसको देखें तो ये बस एक वे है इसको करेक्ट मार्क करने का, राइट? लाइक दिस। ये देखिए, आपका अगर लगता है कि ऑप्शन डी है तो आप क्या करने वाले हैं, आप जो है डी के सामने वाले जो बबल है या ओवल है या सर्कल है उसको डार्क करने वाले हैं, और उसको पूरा डार्क करने वाले हैं। उसको पार्शियल डार्क नहीं करेंगे। उस रीजन के बाहर डार्क मत करने लग जाना, ओके? क्यों अपना टाइम वेस्ट करोगे, है ना? उस रीजन के अंदर डार्क करना, ओके? और उसको पूरा डार्क करना, पूरा ब्लैक या ब्लू जो भी आप कर रहे हो, पूरा ब्लैक या ब्लू कर देना बॉल पेन से, है ना? पार्शियल डार्क करते हो, यू वोंट गेट द क्रेडिट। वो OMR शीट रीड ही नहीं करेगी कि आपने मार्क किया है। ऐसे उसको में जाके टिक कर देते हो, वेल OMR शीट इज नॉट गोइंग टू रीड। उसमें जाके क्रॉस कर देते हो, OMR शीट इज नॉट गोइंग टू रीड। द ओनली वे टू मार्क इज कि आपने उसको डी मार्क कर दिया, ओके? जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, ओके? अब इसमें अगर आपको इसका ऑप्शन बी सही लगता है, ओके? तो अब क्या करने वाले हैं, आप देखिए ये करने वाले हैं दैट आप फर्स्ट क्वेश्चन के सामने जो बी ओवल है उसको डार्क करने वाले हैं, ओके? वी आर गोइंग टू डार्क दैट थिंग entirely. You have to dark that entire section. You shouldn't leave any portion of that oval unfilled. आपको उस ओवल का कोई भी पोर्शन खाली नहीं छोड़ना है। Is that okay? And then they're not done. अब देखिए, there comes this important point. अब आ जाती है important बात। We are not done yet. अभी बात खत्म नहीं हुई है। अगर आपको लगता है कि वन का आंसर बी है तो बी सिर्फ डार्क करके छोड़ना नहीं है, नहीं, जाइए। आपको दिखता है वन क्वेश्चन के जस्ट आगे एक बॉक्स बना हुआ है, ये बात दिखती है, yes. ये दिखती है। उस बॉक्स में जाके आपको बी लिखना पड़ेगा, ओके? उस बॉक्स में आपको बी भी लिखना पड़ेगा। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट आपको जस्ट नॉट बी मार्क करना पड़ेगा, आपको उस बॉक्स में जाके बी भी लिखना पड़ेगा। दैट्स वेरी क्रूशियल। इनफैक्ट आई विल कम टू इट कि क्या होता है, ये नहीं करेंगे और वो करेंगे, बट कीप इन माइंड, अगर आपको एक क्वेश्चन सही ढंग से आंसर करना है, इट मींस कि पहले आपको उसको मार्क करना पड़ेगा, फिर उसके सामने जाके एक करेक्ट रिस्पॉन्स फिल करना पड़ेगा। इज दैट ओके? जैसे बी मार्क किया तो बी आपको बॉक्स के अंदर लिखना पड़ेगा। इज दैट ओके? ओके। द नेक्स्ट थिंग इज, है ना, तो दैट्स द थिंग हियर, यहाँ पे ये चीज है, राइट? एंड देन इट सो हैपेंस दैट अगर आपने, एक्सक्यूज मी, सो दैट्स द पॉइंट। सो इट सेज दैट आपके पास 4 रिस्पॉन्सेज हैं, आपको एक सर्कल उसमें फिल करने वाले हैं, ओके? जब 4 रिस्पॉन्सेज में से एक आप फिल कर रहे हैं
तो उसके करस्पॉन्डिंग बॉक्स में आप जाके आंसर लिख दें। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, अब देख रहे हैं नेक्स्ट, अगर मैं उस स्लाइड पे वापस से जाऊं तो आपको ये दिखता है कि इस बॉक्स के आगे भी एक सर्कल बना हुआ है, नहीं बना हुआ है, राइट? ओके, और उसके ऊपर हैश है, लाइक हैश वाला रो देखिए, हैश वाले रो के नीचे भी एक सर्कल बना हुआ है, नहीं? व्हाट डज दैट स्टैंड फॉर? इसका क्या मतलब है? एंड व्हाट सिग्निफिकेंस डज दैट हैव? Does it even have any significance? Yet, yes, it has. The significance is that, suppose that I want to leave question number 2 aside. Assume कीजिए कि मुझे question number 2 जो है छोड़ देना, I don't have to attend that, right? तो मैं क्या करूंगा, मैं हैश के नीचे जाके question number 2 के सामने वाला सर्कल वो डार्क कर दूंगा। ओके, हैश के नीचे question number 2 वाला सर्कल मैं क्या कर दूंगा, हैश के नीचे क्वेश्चन नंबर 2 वाला सर्कल मैं डार्क कर दूंगा। ऐसा अगर मैंने कर दिया, इट मींस मैंने क्वेश्चन छोड़ दिया। ओके, इन फैक्ट दिस इज अ प्रोटोकॉल दैट वी हैव टू ऑब्जर्व थ्रू आउट द पेपर। एंड व्हाट्स दैट इफ वी वांट टू लीव अ क्वेश्चन असाइड, अगर हमें एक क्वेश्चन को छोड़ना है तो वी हैव टू गो टू दैट क्वेश्चन एंड वी हैव टू मार्क दैट सर्कल। हमें उस सर्कल को डार्कन करना है और उस हैश के नीचे जाके, हैश में नंबर्स आप जानते हैं, लाइक यू गाइस आर फेमिलियर विद लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर्स, सो यू नो दैट आपके पास हैश नंबर को डिनोट करता है, राइट? सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप जिन जिन क्वेश्चंस को छोड़ेंगे उन क्वेश्चंस के सामने जाएंगे, उस सर्कल में को डार्कन करेंगे और फिर आगे चलेंगे, राइट? ओके, नाउ कम्स द क्वेश्चन, नाउ यू पीपल आर क्यूरियस। अब आपके जहन में बहुत कुछ आ सकता है कि आपसे बबल भी क्यों करवाया और बॉक्स में भी क्यों करवाया ना। Assume that, सोचिए, it's entirely possible that there might be lapses in our concentration while we are solving a paper. हम एक पेपर को अगर सॉल्व कर रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि हमारे कंसंट्रेशन में कुछ लैप्स हो जाए, राइट? तो अगर कंसंट्रेशन में लैप्स होता है, हम सोच रहे हैं ए और हमने फिल कर दिया, हमने डार्क कर दिया बी को, ओके, then that problem can still be salvaged। मेरी बात सुनिए, this is very important। मैं सोच रहा था ए डार्क करना है और मैंने डार्क बी कर दिया है, तो इसको अभी भी बचाया जा सकता है। इस प्रॉब्लम को कैसे बचाया जा सकता है? अब बॉक्स में जाके ए लिख दीजिए। ओके, अब बॉक्स में जाके ए लिख दीजिए। द एंट्री इन द बॉक्स विल बी टेकन एज फाइनल। जो बॉक्स की एंट्री है, एक्सक्यूज मी, उसको फाइनल लिया जाएगा। इज दैट ओके? जो बॉक्स की एंट्री है ना, उसको फाइनल लिया जाएगा। आप फर्क नहीं पड़ता आपने अगर OMR में किसको डार्क किया है, अगर आपने जो बॉक्स में लिखा है उसी चीज को फाइनल लिया जाएगा। इज दैट ओके? यस। अच्छा देखिए, बिल्कुल करेक्ट वे क्या है मार्क करने का, कि आप जिस ऑप्शन को डार्क कर रहे हैं उसी के एंट्री लिखें। ओके, बट ऐसा आपने गलती से कर दिया कि भाई किसी और ऑप्शन को मार्क कर दिया और एंट्री तो कुछ और करनी थी, तो वेल आप एंटर वो कर दीजिए जो करेक्ट है, आपका आंसर करेक्ट माना जाएगा। Is that okay? Okay. So which means that if there is a conflict between what you have darkened and what you have entered inside the box, so the entry inside the box will be taken as your final answer. तो अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है कि आपने कुछ डार्क किया और कुछ लिखा इसके बीच में, तो जो आपने बॉक्स में लिखा है वो आंसर फाइनल लिया जाएगा। ओके, नाउ देयर विल बी अ लॉट ऑफ क्वेश्चन, आपके जहन में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे, राइट? व्हाट इफ आपने डार्क नहीं किया और आपने बॉक्स में लिख दिया? वेल, अगर आपने ऐसा कर दिया, स्टिल जो आपने बॉक्स में लिखा है दैट विल बी टेकन एज योर करेक्ट आंसर। जो आपने बॉक्स में लिखा है उसको आंसर आपका ले लिया जाएगा। ओके, अगर आपने डार्क नहीं भी किया तो फाइन। और फिर आपके जहन में आ रहा होगा, अच्छा अगर डार्क कर दिया और बॉक्स में नहीं लिखा फिर? तो वेल, अगर डार्क कर दिया और बॉक्स में नहीं लिखा तो वेल द क्वेश्चन विल बी काउंटेड एज अनअटेम्प्टेड। फिर आपको क्वेश्चन कैसे काउंट किया, मतलब वो क्या समझेंगे कि आपने क्वेश्चन ही अटेम्प्ट नहीं किया। दैट्स such a pathetic situation to be in। सोचिए, आपने इतनी मेहनत से क्वेश्चन सॉल्व किया, डार्क भी कर दिया बबल और बॉक्स में नहीं लिखा, एंड नाउ दे आर अनविलिंग टू कंसीडर दैट यू हैव अटेम्प्टेड द प्रॉब्लम। तो बॉक्स में लिखना इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट आई विल से दिस कि आप ऐसा क्यों करेंगे, दैट व्हाई यू विल टेक दिस अनड्यू रिस्क ऑफ नॉट डार्कनिंग दोस बबल्स, है ना? तो आप डार्क भी करिएगा और बॉक्स में भी लिखिएगा। बॉक्स में आपको एक सेकंड चांस दिया जाता है अपने आप को करेक्ट करने का, कि भाई ऐसा तो नहीं कि आपने कुछ गलत कर दिया है ना? अच्छा देखिए, लाइक इट हैज सम एडवांटेजेस, आई टेल यू, मतलब इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। जैसे क्या है
कि जैसे ऐसा लगता है कि दिस इज वेरी आर्बिट्री. नो, दिस इज नॉट आर्बिट्री. एक तो आपको बात दिख गई ना कि भाई मैं सोच रहा था ए, मैंने डार्क कर दिया बी. ये होता है एग्जाम में. लाइक आई हैव डन दिस when I was a student. Students at VMC always complain कि सर like दो क्वेश्चन तो इसलिए गलत हो गया because I was thinking A and मैंने डार्क कर दिया B. It happens even to the best of people. A minor lapse in concentration and you find yourself that A का B कर दिया आपने and you see that okay now we are done. अब क्या करें? So the point folks here is कि अब they have given a reprieve. आपको एक chance दिया है. Correct your mistake, right? That's the thing. Next point is आपको जो क्वेश्चन छोड़ना है, यू हैव टू लीव दैट क्वेश्चन साइड, उसको भी डार्क करना है हैश के नीचे. क्यों करना है? सोचिए ना. ऐसा 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 देयर इज अ रीजन आई बिलीव एंड दैट इज दैट बिकॉज़ आप सोचिए, अगर आपने ऐसा किया तो डू यू एग्री आपने टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जिसको मार्क किए होंगे इट्स इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आपके पेपर पे है. डू यू एग्री? नहीं. आपने जितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए और जितने क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट किए उनका सम विल बी इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस. नहीं होगा. कभी कभी क्या होता है ना कि हम गलती से एक क्वेश्चन स्किप कर जाते हैं पढ़ना, है ना. लाइक ऐसे ना 13 के बाद ना सीधा 15 देख लिया. कुछ भी आई डोंट नो, इट कुड बी एट्रीब्यूटेड टू अ लॉट ऑफ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, बट मैंने 13 के बाद 15 देख लिया. तो देखिए, अगर सोचिए 13 के बाद 15 देख लिया और मैंने 14 गलती से मिस कर दिया, तब तो जब मैं काउंट करूंगा अपने ओएमआर शीट में, तब तो आप मेरे से एग्री करते हैं ना कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस व्हिच आई हैव डार्कन्ड विल बी वन लेस देन द नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट दे हैव आस्क्ड, है ना. तो फिर मुझे पता चल जाएगा यार मैंने एक तो क्वेश्चन गलती से छोड़ दिया कहीं पे. I'll go back to that problem, try to look for that problem and try to solve it in the given time. नहीं? तो they all serve their purpose. ये सब अपना काम करते हैं, right? Okay. Okay, so that's the thing about this. ये है आपके OMR sheet के बारे में. So I'll summarize what I have said. क्या यूज करना है? बॉल पेन यूज करना है, या ब्लू करना है, या ब्लैक करना है. ओके. आपको क्वेश्चन पेपर कोड सबसे ऊपर लिखना है, उसके बाद एक डिक्लेरेशन लिखना है. पार्शियली फिल नहीं करना है. इज दैट ओके? फुल फिल करना है. फुल फिल करने के बाद बॉक्स में आपको वो लिखना है कि आपका जो आंसर है. किसी क्वेश्चन को अगर आपको लीव करना है, छोड़ना है, तो आप उसके हैश के नीचे वाला सर्कल उसको आप डार्क करने वाले हैं. गुड. अगर आप डार्क करते हैं और बॉक्स में नहीं लिखते हैं तो दैट क्वेश्चन विल बी कंसिडर्ड अनअटेम्प्टेड. समझा जाएगा आपने अटेम्प्ट नहीं किया. अगर आप डार्क नहीं करते हैं और बॉक्स में लिखते हैं, मान लिया जाएगा आपने अटेम्प्ट किया है. आप दोनों ही करते हैं, डार्क भी करते हैं और बॉक्स में भी लिखते हैं, मान लिया जाएगा कि दैट यू हैव अटेम्प्टेड द क्वेश्चन, राइट. सो दैट्स द थिंग अबाउट दिस टेस्ट. नाउ दिस इज काइंड ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी and unprecedented. Like I don't think that I have seen, and many people like me have seen, such elaborate set of instructions and reprieve at every moment, and a chance that student can course correct even if they have fumbled during the course of examination, right? Okay. Moving on then. Now we come to the very important part called MCQ. And आपका जो टेस्ट फॉर्मेट होने वाला है वो क्या होने वाला है? MCQ. Now we will discuss various strategies that how do we go this, how do we do this, the things that we do, the things that we don't. So first of all, let me elucidate the difference between a multiple choice test and subjective examination. Subjective exam में और multiple choice test में क्या फर्क होता है? Well, I'll tell you a basic difference. आपको एक basic difference बता रहा हूँ, and of course you will be able to appreciate it. Imagine that you're in class 9th. आप सोचिए आप class 9th में, you have been asked to prove that Pythagoras theorem. आपको Pythagoras theorem prove करने बोला गया, and you have absolutely no clue. और बहुत ज्यादा आपको नहीं पता है, थोड़ा थोड़ा पता है, बहुत ज्यादा नहीं पता है. आप क्या करते हैं? सिंस द क्वेश्चन इज सब्जेक्टिव, आप लिखते हैं सॉल्यूशन. फिर लिखते हैं फर्स्ट लाइन में आप लिखते हैं वेल टू प्रूव के बाद लिख देते हैं पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट. ओके. अब बीच में आप कुछ लॉजिकली ठीक ठाक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स लिखते हैं जो नहीं जा रहा है पाइथागोरस थ्योरम प्रूव करने के लिए, नहीं जा रहा है, बट देयर आर लॉजिकल मैथमेटिकल स्टेप्स, दे आर नॉट इनकरेक्ट. ओके. देन लास्ट में एज द ट्रेडिशन गोज आप लिख देते हैं हेंस प्रूव पाइथागोरस थ्योरम, राइट. Now, when the teacher comes and examines your notebook or your answer sheet, what she does is that, or he does, what they do is that, वो देखते हैं पेपर, and what they do is that, well, अच्छा to prove तो लिख दिया, well 1 mark, body भी not bad, logical तो है ही, चलो 1 more mark, conclusion भी ठीक है, okay, half mark maybe. तो 5 marks की प्रॉब्लम है तो आपको 2 marks मिल जाते हैं, maybe 2.5. if the teacher is generous. नहीं, this won't happen in MCQ. ये MCQ में तो होगा नहीं आपके साथ. You're getting my point. Either you'll get 0 or you'll get 4.
0 मिलने की probability is 3/4 and 4 मिलने की probability is 1/4. So MCQ examinations are quite different from these examinations that you see here, right? The reason why some people think that are they MCQ multiple choice questions or are they most confusing questions? Well, we'll come to that and address that point shortly. Now we are going to discuss various things. अब हम कुछ चीजें discuss करने वाले हैं यहाँ पे, right? What's that? That is strategies that what do you do in an examination? The first thing is that read the question, read the entire question. I can't possibly overstate the importance of what I have just said. कि भाई पूरा पहले question तो पढ़ो. Like, why are you in such a tearing hurry? क्यों जल्दी है आपको? Like, किस चीज की जल्दी है? Okay? आपने पूरा question नहीं पढ़ा, आपने पूरा gist नहीं समझा और आप आंसर करने लग गए. That's the worst possible thing that you can do. और मैं आपको बताता हूँ कि that how we can set traps. मैं आपको कैसे trap में बांध सकता हूँ. Imagine, okay? There is a famous problem in NCERT. आपके एक NCERT की बहुत ही famous problem है, okay? मैंने क्या किया ना कि क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही शुरू किया, एक दो लाइन बिल्कुल वैसी है, बिल्कुल वैसे ही जो उस फेमस प्रॉब्लम की है. गुड, यस. और मैंने लास्ट में जाकर ना कुछ और क्वांटिटी पूछ दी, ओके. बट वो प्रॉब्लम इतनी फेमस है कि उसका आंसर भी आपको पता है और मैंने आंसर को उस ए ऑप्शन में डाल दिया आपके. ठीक है, तो आपने पहली लाइन पढ़ी, दूसरी लाइन पढ़ी और कहा दिस इज समथिंग दैट आई ऑलरेडी नो, दिस इज समथिंग दैट द टीचर हैज ऑलरेडी टॉट मी इन द क्लास, this is something that I have read in maybe NCERT or maybe exemplar or maybe one of the help books that I refer to. ये यार इसका आंसर तो यही आता है, आपने देखा और आपने टिक कर दिया और आप चले गए आगे without even realizing that the stuff being asked is not the stuff that you have answered. जो आपसे पूछा जा रहा है आपने उसका आंसर किया ही नहीं, right? So that's something that we avoid at all costs. ये ऐसी चीज है जो हम अवॉइड करते हैं सारे कॉस्ट पे. Please don't do this. ये काम मत करिएगा. रीड द क्वेश्चन केयरफुली, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़िए, ढंग से पढ़िएगा कि आपसे क्या पूछा जा रहा है. इनफैक्ट आई विल से दैट आई विल स्टिक माय नेक आउट एंड से दैट दिस इज द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम सक्सेसफुली एंड दैट इज टू रीड इट. पता है क्या, पढ़ने से क्या भी होता है, कभी कभी यू गेन इनसाइट इन द प्रॉब्लम एंड मे बी यू गेन एन इनसाइट इनटू द वर्किंग ऑफ द प्रॉब्लम. हाउ बैड इज दैट? इसमें गलत क्या है? नहीं. Okay, so the first thing is that read the question. Read the question very carefully. Point number two is that answer it in your mind, right? So let me explain what I mean when I say that. मुझे बताने दीजिए कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ. I don't mean that कि भाई ऐसे पेन पेपर पे नहीं लिखना. But what we are saying is that I don't think it's a very healthy strategy to start scribbling on the paper as soon as you have something like this, or something like a question in your hand. आपके पास एक क्वेश्चन आ गया और आपने ना पेपर पे स्क्रिबल करना शुरू कर दिया. ये बहुत अच्छा आइडिया नहीं है. आई डोंट थिंक इट्स अ ग्रेट आइडिया, नो. एंड आई विल टेल यू व्हाई, और मैं आपको बताऊंगा क्यों. दैट्स प्रिंसिपली बिकॉज ये ऐसा इसलिए होता है बिकॉज आप सोचिए कि एक क्वेश्चन आया ना, ओके, आई विल इन्वेस्ट सम टाइम थिंकिंग अबाउट द प्रॉब्लम. मैं थोड़ा सा ना कुछ सेकेंड्स 5-10 मैं प्रॉब्लम सोचने में लगाऊंगा कि यार ये प्रॉब्लम है, व्हाट आर द वेरियस पॉसिबल लाइन ऑफ अटैक. सोचिए, इफ द प्रॉब्लम इज थ्योरेटिकल, अगर प्रॉब्लम थ्योरेटिकल हुआ, मोस्ट प्रोबेबली आई विल गेट एन आंसर इन द माइंड इटसेल्फ. मुझे कुछ करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे पास आंसर भी आ जाएगा. However, if the problem is computational, अगर प्रॉब्लम computational है, then at least I'll get some insight into the working strategy of the problem. Like मुझे कुछ तो पता चलेगा कि अच्छा यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज करना है, अच्छा नहीं यहाँ पे वो वाली चीज नहीं करनी है, अच्छा नहीं ऐसी प्रॉब्लम हमने देखी थी, यहाँ पे ये नहीं करते. ये एकदम क्लासिक ट्रैप है जो ऐसे सेट किया जाता है, जिसमें हम लास्ट टाइम में फंस गया था या मैं फंस गई थी. एंड आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस, आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट दिस. अच्छा, मैं आपको इससे भी इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ कि व्हाई यू शुड इन्वेस्ट 5 to 10 seconds on thinking about the problem or something like that. बिकॉज सोचिए ना, अगर आपके पास एक प्रॉब्लम आती है ना और आप ऐसे स्क्रिबल करना शुरू कर देते हैं, लिखना शुरू कर देते हैं. आई हैव डन दिस ड्यूरिंग माय स्टूडेंट डेज एंड व्हाट आई फाउंड वाज दैट आई वाज एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम. प्रॉब्लम तो हो जाती थी, बट इट रिक्वायर्स सिग्निफिकेंटली लार्जर अमाउंट ऑफ टाइम. मुझे लगा कि टाइम ज्यादा लग रहा है. देन आई चेंज माय स्ट्रेटजी कि पहले मैं क्वेश्चन आता था, थोड़ा सोचता था उसके बारे में. तो पता है क्या, वो जो थोड़ा सोचने का टाइम है ना, इट्स नॉट वेस्ट, इट्स इन्वेस्टमेंट. वो इन्वेस्टमेंट है. आप ये सोचते हैं, अच्छा
थोड़ा अब आप सोचते हैं कि अच्छा ठीक है ये हुआ, ओके ओके ओके, अब क्या, अब जब आप सोचने लगते हैं तो आपको लगता है अच्छा ये तो लॉन्ग मेथड है यार, ये है शॉर्ट वाला मेथड जिससे अब हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो आप हमेशा देखेंगे कि अगर आप थोड़ा सा टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं सोचने में, तो इवेंचुअली कैलकुलेशन का टाइम थोड़ा कम हो जाता है, राइट? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड, eliminate wrong answers. Now, this is such an important strategy for many MCQ examinations. बहुत सारे MCQ examinations में elimination is perhaps one of the best possible strategies to answer a question. अगर मेरे पास क्वेश्चन आप देंगे एंड आई एम एब्सोल्युटली एट अ लॉस, तो भाई मैं एलिमिनेशन यूज करने वाला हूं। अच्छा, एलिमिनेशन आप कैसे करते हैं? एलिमिनेशन के लिए you pick up cues from the problem. आप प्रॉब्लम से cues pick up करते हैं, hints. There are few problems that the hints are inbuilt in them. उनमें hints inbuilt होते हैं. Okay, you have to just look for them in the right places. For example, and they're very subject specific. In fact, I'm going to take an example in this live session, and I'm going to take an example from CBSE sample paper. Right? So bear with me. रुक जाइए. But I'll just tell you that अगर आप physics की problem है, right? And पूछा यार कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, और एक दो ऑप्शन जो है ना वो एम्पियर है, मतलब करंट का है, तो अरे भाई तो खत्म हो गया मत, वो तो दो ऑप्शन हो ही नहीं सकते ना, बिकॉज पूछा पोटेंशियल डिफरेंस और एम्पियर यूनिट्स है, तो वेल वी आर डन। ओके, पूछा उन्होंने वेलोसिटी, और एक ऑप्शन मेरे पास मीटर्स में है, दूसरा जो ऑप्शन है वो मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर में है। हम जानते हैं कि जो फर्स्ट है वो डिस्टेंस है, और जो सेकंड है वो एक्सेलरेशन है, उसका मैग्नीट्यूड है, तो वो दोनों तो आंसर हो ही नहीं सकते। तो चार में से तो मैंने दो एलिमिनेट ही कर दिया, दो एलिमिनेट कर दिया। अब दो में हम गैस कर सकते हैं, या दो में हम कुछ सोचने की कोशिश कर सकते हैं, है ना? या आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और अपने आप से पूछते हैं कि ये जो ऑप्शन है ये किसी जनरल प्रिंसिपल को कॉन्ट्रडिक्ट करता है क्या, ये किसी जनरल प्रिंसिपल को वायलेट करता है क्या, और अगर करता है तो फाइन, वो तो ऑप्शन होगा नहीं, है ना, कुछ और ऑप्शन होगा। दैट कांट बी द ऑप्शन, वो तो ऑप्शन नहीं हो सकता, कुछ और होगा। वी विल टेक केयर ऑफ दैट। लाइक या तो हम इसको गेस करने वाले हैं, या हम थोड़ा और एजुकेटेड गेस करके दो में से भी एक एलिमिनेट करने वाले हैं, राइट? तो हाउ डू यू एलिमिनेट रॉन्ग आंसर्स? वेल, यू हैव टू पिक अप क्यूज फ्रॉम द प्रॉब्लम। आपको वहां से प्रॉब्लम से जो है वो क्यूज पिकअप करने पड़ेंगे। इज दैट ओके? ओके, या so wait, and now, so that's that, and that's very important. ये बहुत important बात है, always keep that in mind, right? So now fourth is, and a very important one, is that read every option, read every answer. मैं आपको बताता हूँ कि that it has happened to many students, right? And I personally have experienced that at BMC. आया बोला कि सर क्या हो गया, तो फर्स्ट ऑप्शन देगा सर, एंड इट वाज सो टेम्पटिंग दैट आई टिक दैट ऑप्शन। बहुत ही टेम्पटिंग था सर, टिक कर दिया, बाद में पता चला कि नहीं नहीं कुछ और है। आपको पता है कि समटाइम्स इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इट्स नॉट द करेक्ट आंसर दैट यू हैव टू पिक अप, इज द बेस्ट आंसर दैट यू हैव टू पिक अप। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ना कभी कभी आपको करेक्ट आंसर नहीं पिक करना होता, कभी कभी आपको बेस्ट आंसर पिक करना होता है, लाइक बेस्ट अमंग दीज। ओके, अच्छा, तो पर्टिकुलरली इन केमिस्ट्री, है ना, आपको एक रिएक्शन दे दिया, बोला इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है, और ए में कुछ दे दिया, और आपको पता है कि ये भी प्रोडक्ट बनता है, आपने ए देखा, टिक कर दिया, आप कहते हो अरे एक करेक्ट है। हु केयर्स अबाउट द ऑप्शंस लाइक बी सी डी, है ना? वेल, बट डी में भी उन्होंने एक प्रोडक्ट दे दिया है जो भी वो इस रिएक्शन से बनता है, और इनफैक्ट डी में जो प्रोडक्ट बनता है वो 99% बनता है, और जो ए में प्रोडक्ट आपने टिक किया वो एक्चुअली 1% बनता है, ठीक है? तो दे आर नॉट गोइंग टू कंसीडर योर आंसर इज करेक्ट, फिर वो डी करने वाले हैं आपके पास। ओके, बट आपने ए देखा, आपने टिक कर दिया, आपने बोला हु केयर्स नाउ, ठीक है? दिस इज वन ऑफ द पिटफॉल्स दैट स्टूडेंट कैन डू। देखिए, अगर आपके पास द आंसर इज अ न्यूमेरिकल वन, अगर आपने प्रॉब्लम सॉल्व किया और न्यूमेरिकल आंसर आ गया, से द आंसर इज पाई लाइक 3.14, या फिर अप्रोक्सीमेटली 22/7, राइट, या पाई आंसर है, या ई आंसर है, या 1 आंसर है, 1.2 आंसर है, तब तो ठीक है ना यार, आपका आंसर आ गया, जो मैच कर रहा है उसको टिक कर दो, नो प्रॉब्लम। But what if the question is theoretical, and what if the question is not demanding a correct answer, rather it's demanding the most appropriate answer? In that case, you are going to miss out on those theoretical problems, or in fact mark them incorrectly, if you happen to be one among those who is tempted, who succumbs to the temptation of taking the first answer which they think is correct, right?
तो अगर आपको ये लगता है ना कि आप उनमें से हैं जो पहला आंसर देख के टिक करके भाग जाते हैं थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स में, डोंट डू दिस। थ्योरेटिकल प्रॉब्लम है, चारों ऑप्शन पढ़ो, फिर बताओ कि क्या आंसर होगा। इज दैट ओके? आई विल कम टू दिस पॉइंट अगेन, मैं वापस आऊंगा इस पे नेक्स्ट स्लाइड में, बेयर विथ मी, राइट। फिफ्थ, आंसर द क्वेश्चंस दैट यू नो फर्स्ट। आपको पहले वो क्वेश्चंस आंसर करने चाहिए जो आपको आते हैं, आपको वो क्वेश्चंस नहीं आंसर करने चाहिए जो आपको नहीं आते। ओके, why? I'll take up this point in great detail in the next few slides, but let me take you to a thought experiment. चलिए मैं आपको एक thought experiment पे ले जाता हूँ, right? Suppose that it so happens that I have given you a question paper that contains 10 questions and 30 problems. Suppose कीजिए कि मैंने आपको एक question paper दिया है जिसमें 10 question हैं, sorry, yeah, 10 questions हैं, 30 minutes हैं. Intentionally, I have made the question paper in such a way that the first 5 questions are extremely difficult. मैंने question paper ऐसा बनाया है जानबूझ के कि पहले 5 questions बहुत ही मुश्किल बना दिए, बहुत ही मुश्किल. I know that it's beyond anyone's capability who is in class 12th or class 10th or whatever, right? Next 5 जो questions मैंने बनाए हैं वो मैंने ऐसे बनाए हैं जो like बहुत ही आसान, like very easy kind of stuff. Okay, now if you are the kind who attempts a question chronologically, नहीं, आप ऐसे हैं जो क्वेश्चन को chronologically अटेम्प्ट करते हैं, like मतलब अटेम्प्ट करते हैं, like पहले 1 करता है, फिर 2 करता है, फिर 3 करता है, फिर 4 करता है, फिर 5 करता है, so on. तो अगर आप मेरा पेपर देने बैठे, क्या होगा देखिए, अब फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, आपसे नहीं होगी, यू विल से अरे यार ये क्या हो गया, फर्स्ट ही क्वेश्चन नहीं हो रही, अच्छा यू विल से ओके कोई बात नहीं, चलो नेक्स्ट देखते हैं. फिर आप क्वेश्चन नंबर 2 करने जाएंगे, उसमें भी 5 मिनट आपने इन्वेस्ट किए, फर्स्ट क्वेश्चन में भी 5 मिनट इन्वेस्ट किए, नहीं हुआ, सेकंड में भी 5 मिनट इन्वेस्ट किए, नहीं हुआ, अब क्वेश्चन नंबर 2 नहीं हुआ, तो देन यू स्टार्ट डाउटिंग योरसेल्फ, अरे भाई क्या बात है, लाइक एम आई हैविंग अ बैड डे, कुछ खराब सा दिन चल रहा है मेरा, तो क्या प्रॉब्लम है. ओके, 10 मिनट हो गए, 2 प्रॉब्लम नहीं हुई आपसे, यू जंप टू द थर्ड वन, बिकॉज आप 1 2 3 करके जाते हैं, थर्ड पे आप गए, थर्ड 5 मिनट ट्राई किया, नहीं हुआ, देन यू आस्क योरसेल्फ कि आपने कुछ तैयारी की भी थी एग्जाम के लिए या नहीं की थी, या यू वर फूलिंग अराउंड, और या दूसरों से प्रॉब्लम हो रही है और ये क्वेश्चन पेपर में मुझे कुछ आ ही नहीं रहा है, क्या मैं ठीक से पढ़ के आया या नहीं आया. Now 15 minutes or 13 minutes or 14 minutes, whatever, and 0 problems, right? You come to question number 4. You invest 5 minutes. Because अभी तक आपने 3 क्वेश्चन आपसे नहीं हुए और वो भी इतना ही मुश्किल प्रॉब्लम है, वो भी आपसे नहीं होता है. You are absolutely broken in spirits, right? You don't know what to do next. आपको कुछ भी नहीं पता आप आगे क्या करना है, आपसे 4 लगातार क्वेश्चन नहीं हुए. You move on to the 5th one, जो भी जाके आपसे नहीं हुआ, and you see that at the end of 20 to 22 minutes, you have not been able to solve a single problem. आपसे एक प्रॉब्लम नहीं हुई है. Okay, you will be dispirited, you will be broken spirits, and आप पता है क्या करने वाले हैं? The next 5 questions that you attempt, you are going to fumble. अब जो आप next 5 क्वेश्चन करने वाले हैं उसमें आप फंबल करने वाले हैं. क्यों फंबल करने वाले हैं? Because you have been bogged down, you're overwhelmed, you think that the paper is so difficult that you will not be able to solve any problem. आपके पास जो आसान प्रॉब्लम आ गई ना, उसमें भी आप जाएंगे 2 + 3 को 6 लिखेंगे, गलत आंसर मार्क करेंगे, इवेंचुअली आप देखेंगे कि दैट 30 मिनट्स में आप 9 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए या 9 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए, उसमें से 2 सही था और 7 तो आपने कुछ गलत कर दिया और 5 तो आपको पता ही नहीं चला. ओके, नाउ कंसीडर दिस कि अगर आप 5 कोई उल्टा करना शुरू करता, लाइक 10 करता, 9 करता, 8 करता, 7 करता, 6 करता, तो बिकॉज द प्रॉब्लम्स वेरी वेरी इजी, तो वो शायद ये 5 प्रॉब्लम्स 10 मिनट में कर देते. इजी प्रॉब्लम्स ऐसे ही होती है, 2 मिनट में हो जाती है. और पता है, देन यू वुड हैव कैरीड दिस एक्स्ट्राऑर्डिनरी अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस गोइंग इनटू दोस वेरी डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स, और फिर आप जो ना ये पूरा एक्स्ट्राऑर्डिनरी कॉन्फिडेंस लेके जाते हैं नेक्स्ट राउंड में उन प्रॉब्लम्स में. इट्स एंटायरली पॉसिबल कि आप कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर देते या एक 2 प्रॉब्लम सही कर देते, एंड देन द स्कोर बोर्ड वुड रीड, और फिर पता है स्कोर बोर्ड क्या होता? एट द एंड ऑफ 30 मिनट्स यू हैव अटेम्प्टेड ऑल द 10 प्रॉब्लम्स, यू हैव बीन एबल टू फिगर आउट 6 प्रॉब्लम्स, आपने 6 सही किया है, 1 गलत किया है, 3 नहीं हुई, समथिंग लाइक दैट, राइट?
Now, this scoreboard is radically different from the last scoreboard. And that's principally because, as I always say, that examination is just not a test of your skill. It's also a test of your temperament, right? So always attempt the easy ones. First, all the questions that you know first, right? How do you do this? Kaise karte hain? I'll come to it in the next slide, right? Okay. Now, since it's an MCQ examination, I know that you must be quite eager, and I should tell you something to make an educated guess. So what if you encounter a question, agar aapko aise question aa gaya, or you just can't figure out that usme kya karna hai, right? You don't know the head and tails of it. So, well, the choice is elimination. जैसे हमने देखा कि आप eliminate कैसे करते हैं, right? I think that you will know that what elimination entails. आपको पता है कि elimination में क्या होता है. Elimination में होता है कि that आप गलत choices को eliminate करते हैं. कैसे eliminate करते हैं? That's a different phenomenon. So how do you do this? Let me take an example. मैं एक example लेता हूँ, right? So, in fact, I have told you कि basically आप क्या करते हैं, right? Educated guess लेते हैं. आप फिगर करने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है. आप फिगर करने की कोशिश करते हैं कि भाई यहाँ पे क्या यूज होगा. आप फिगर करने की कोशिश करते हैं कि ये कौन सा सब्जेक्ट है. आप फिगर करने की कोशिश करते हैं कि ये क्वांटिटीज जो है इसके डायमेंशंस क्या है. आप फिगर करने की कोशिश करते हैं कि इसके यूनिट्स क्या है. आंसर्स में सेम यूनिट्स में है या नहीं है. जो पूछा जा रहा है वही है या नहीं है क्वेश्चन में. These are the few things that you take into account before making an educated guess. What I'm going to do rather is मैं क्या करने वाला हूँ that I'm going to take मैं क्या करने वाला हूँ. I'm going to take in fact a question from CBSE sample paper. मैं CBSE sample paper से question लेने वाला हूँ. And well, let me know that if you see my screen now. अगर अब मेरा screen दिखे आपको वैभव तो आप मुझे बताना. It's not visible as of now. I can only see your presentation. Yeah, right. Yes, it's visible now. It's visible now. Yeah, thank you. Yeah. Great. So let me take this problem, right? मैं आपको एक problem करके बताता हूँ. I'm not going to solve this problem. Heck, I'm going to pretend that I don't even understand the problem. मैं pretend करने वाला हूँ कि मुझे पता भी नहीं कि problem क्या है. Let's pretend that we don't know what this problem is. And we are going to use this educated guess method to solve this problem for us, right? So this is a CBSE sample paper. Like, you can't accuse me of framing a problem of my choice so that I was able to eliminate the options quite easily. But sometimes it so happens that maybe examiner or the paper set is a bit lapsed, or maybe the question does contain some inbuilt hints on purpose. So like, look at this question number 2, just a question number 2, right? It says that a value of k, and k being negative, for which function f defined as blah, I don't care what that function is continuous at x is equal to 0. Let's pretend at this moment that we don't know what a continuity means. Pretend करते हैं भाई कि मैं नहीं पता कि continuous function का मतलब क्या होता है. अरे भाई, let's pretend that हमें ये भी नहीं पता कि function का मतलब क्या होता है. All that this question requires you is a basic literacy of English language and a basic familiarity with mathematics and its symbols. अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको बस थोड़ी इंग्लिश समझ में आनी चाहिए और बेसिक मैथमेटिकल सिंबल्स का इंटरप्रिटेशन आपको आना चाहिए. And we'll be able to solve this problem, right? How come? What I understand from this problem is, मुझे क्या दिखता है इस प्रॉब्लम में क्या है? सिर्फ k की वैल्यू निकालनी है. Do you agree? And what they say is that k must be negative. और उन्होंने बोल दिया कि भाई k नेगेटिव होना चाहिए. तो I'm going to discard each and every option which contains a value of k that is positive. तो मैं उस हर ऑप्शन को डिस्कार्ड करने वाला हूं जो k की उस वैल्यू को कंटेन करता है जो पॉजिटिव है. डू यू एग्री? यस. आई लुक एट ऑप्शन नंबर डी. मैं सबसे पहले ऑप्शन नंबर डी देखता हूं एंड आई सी दैट दिस इज पॉजिटिव, डिस्कार्डेड. ओके. आई सी ऑप्शन नंबर ए एंड सी, और ऑप्शन ए एंड सी. ऑप्शन ए और सी देखता हूं. आई सी दैट देयर आर पॉजिटिव नंबर्स देयर एज वेल. उसमें पॉजिटिव नंबर्स भी हैं, नेगेटिव नंबर्स हैं, यस, बट पॉजिटिव नंबर्स भी हैं, डिस्कार्डेड. What is the option that I'm left with? क्या बचता है मेरे पास? ऑप्शन बी. And so I'm a lay person, I don't know, and I have marked B. Just by virtue of understanding English language and just by virtue of some elementary mathematical literacy, I have been able to solve this problem without even breaking a sweat, right?
And people who are familiar with the idea of continuity indeed can go on and solve this problem, and they'll see that B is indeed the correct answer, right? So this is how you weed out, like, this is how we weed out the good from the bad, okay? This is very important. This is very important, right? Okay, so I'll come back to my presentation. I'm hoping that you can see this. Yes, sir. Yeah, see that Yeah, better? yes, sir. Great, thank you. Okay, so that was that educated guess. Then come to this point that all of the above agar aapke option mein aa gaya, right? Well, all of the above and none of the above. First of all, come to all of the above. Now, all of the above is very tricky. Like, agar aapke option, aapke kisi question mein all of the above ek option aa raha hai, more likely, I won't bet my neck on it, but more likely the answer is going to be all of the above. अच्छा देखिए, अगर all of the above है, तो आपको दो options at least verify करने पड़ेंगे all of the above mark करने के लिए, because answer तो एक ही option होगा, और अगर आपने दो options verify किए और दोनों सही आ रहे हैं, तो the answer can't be A and B. हाँ, the answer has to be D, which is all of the above. Are you getting my point? तो अगर आपके question में all of the above आता है, so you have to be very careful, and you will have to verify. You'll have to verify those two options. आपको दो options verify करने पड़ेंगे. That's very important. That's very important. Is that okay? Yeah. That's the first thing which I'll say that's very important. बहुत important बात है, और ये पहली चीज है. Okay. This is why you shouldn't be in a rush to tick the option that you have identified as correct. इसीलिए मैं कह रहा था कि अगर आप theoretical problem करते हैं और आपको फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट दिख जाता है और आप ऐसे ना टिक करके भाग गए और आपने देखा भी नहीं कि ऑल ऑफ द अबव भी एक चॉइस है, डू यू रियलाइज कि इसका मतलब आपने क्या किया? यू हैव सैक्रिफाइस्ड योर मार्क्स. आपने अपने मार्क्स सैक्रिफाइस कर दिया जो आपके पास इजी फ्री पिकिंग्स थे, लाइक इजी पिकिंग्स, एंड व्हाट यू हैव डन इज दैट यू हैव सैक्रिफाइस्ड दोस मार्क्स at the altar of your recklessness. Don't do this. Then there is this none of the above. None of the above, this can be very tricky because अगर एक question में none of the above आ गया ना यार, so I think that question is going to be lengthy. पता है क्यों? Because we'll have to verify all three options. हमें तीनों options verify करने पड़ेंगे, right? हमें A भी check करना पड़ेगा, B भी check करना पड़ेगा, C भी check करना पड़ेगा, for us to be entirely convinced that the option is indeed none of the above. तो मुझे A भी पता करना पड़ेगा गलत है, B भी पता करना पड़ेगा गलत है, C भी पता करना करेगा कि गलत है, right? तो I'm hoping that we will be lucky enough in somewhere कि हमें ABC में से कोई आंसर मिल जाएगा, and the answer wouldn't be none of the above. Generally, not true always. Generally, अगर none of the above एक option है तो शायद ये आंसर नहीं होता है, and that's principally because none of the above leads to a lot of room, lot of vague stuff to come in. नहीं, because अगर आंसर none of the above है ना, तो फिर आंसर क्या होगा? Well, there are infinite possibilities, and I'm not saying कि ऐसा नहीं होता है, none of the above आंसर होता है, बहुत कम होते हैं ऐसे. Now we come to this point that अगर आपके पास दो answers, so when there are two competing answers, right, and you're sort of confused कि भाई इन दोनों में से कुछ mark करना है, educated guess लिया आपने दो option eliminate कर दिया, दो option बचा हुआ है आपके पास, उसमें से एक option positive connotation, दूसरा जो option है it has a negative connotation. Generally, the idea is to go for things which have positive connotation. Now, it's not like a rule of thumb, but it has been observed in practice that more likely the answer is going to be the one which is positive, and it's skewed in favor of positive by some amount. Kuch amount say is skewed here, number, right? Okay. Now there are these 5 strategies to ace your exams. ये exams को ace करने के लिए ये 5 strategies हैं हमारे पास. First is plan your time. This is such a crucial strategy, and I'm going to tell you something. मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ यहाँ पे कि आप कैसे plan करते हैं अपने time को, right? So, have you ever seen that when a military conducts out an operation in certain areas which is rather remote or inaccessible, what they do first is that they first perform what they call as reconnaissance. तो जब military जाती है ना किसी area में किसी operation को perform करने के लिए, तो वो ना पहले ऐसे नहीं चले जाती है और फिर ऑपरेशन शुरू कर देती है ना? नो, पहले जाती है वो रिकॉनेसेंस करती है. रिकॉनेसेंस का मतलब स्ट्रैटेजिक इवैल्यूएशन. ओके,
वो पता करती है कि इसकी स्ट्रेंथ क्या है, इसकी वीकनेसेस क्या है, यहाँ के डेंजर्स क्या है, यहाँ के एडवांटेजेस क्या है, वैंटेज पॉइंट क्या होगा, यहाँ पे हम कहाँ पे मोस्ट वल्नरेबल होंगे, हम सबसे ओपन स्पॉट कहाँ पे होगा, हम कहाँ पे हम हाइड आउट सीख कर सकते हैं, हम कहाँ से एक विजिलेंस रख सकते हैं. दिस सीक और ऑल दीज ऑप्शंस, सारे ऑप्शंस को ध्यान में रखते हैं, राइट. एग्जामिनेशन इज नो डिफरेंट. तो जब हम एग्जाम दे रहे होते हैं ना, आई डोंट थिंक अ ग्रेट आइडिया इज टू हेडलॉन्ग इनटू द एग्जामिनेशन. द आइडिया इज टू मेक sustainable strategies which will eventually help you to plan better, and if you execute them, then to score better, right? तो सबसे पहले क्वेश्चन पेपर जब आपके पास आए, डोंट डू दिस कि स्टार्ट सॉल्विंग द प्रॉब्लम स्ट्रेट अवे लाइक 1 2 3. नहीं, पहले 3 मिनट आप इन्वेस्ट करेंगे रिकॉनेसेंस में या स्ट्रैटेजिक इवैल्यूएशन में, राइट? अभी गुड? ओके. उन 3 मिनट्स में क्या करने वाले हैं आप क्वेश्चन पेपर जल्दी जल्दी पढ़ने वाले, लाइक ऐसे बिल्कुल जल्दी से, है ना, पढ़ेंगे. अगर आपको क्वेश्चन बहुत ही आसान लगती है कि आप देखेंगे और कर देंगे, तो आप उसके सामने लिखेंगे इजी. ओके. आप क्वेश्चन पढ़ते हैं और आपको लगता है अच्छा ठीक है यार, लाइक इट्स काइंड ऑफ ओके, बट कुछ करना पड़ेगा यहाँ पे. देन आप उसके सामने लिखेंगे एम, मीडियम, गुड. और आपने क्वेश्चन पेपर पढ़ा नहीं है, एब्सोल्युटली नो क्लू हाउ टू प्रोसीड विद द प्रॉब्लम. देन आप लिखेंगे उस क्वेश्चन के सामने डी, डिफिकल्ट. आर वी गुड? And when you have done this in a period of 3 to 4 minutes, जब आपने ये 3 से 4 मिनट में कर दिया, this is such a worthy investment. ये इतना अच्छा सा इन्वेस्टमेंट है. I'll tell you why. It doesn't matter in an examination that whether you have solved an easy problem to score 4 marks or you have solved a difficult problem to score 4 marks. Since every problem weighs the same, सारे problem का weightage same है, so it doesn't essentially matters that which problem is it that you are going to attempt, right? So it would be better if you attempt those problems. ये better ये होगा कि आप उन problem को attempt करें जो problem आसान है, and there will be lot many of them. तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले उस पेपर के सारी इजी प्रॉब्लम्स को करेंगे. ओके, क्रोनोलॉजिकली नहीं करेंगे. फाइन, सारी इजी कर लिया आपने, आपके पास बहुत सारा टाइम बचेगा, बिकॉज़ आई एम वेरी कन्विंस्ड कि आप इजी प्रॉब्लम्स को 2 मिनट के अंदर खत्म कर देंगे. ओके, you'll have lots of time for solving medium and difficult problems. फिर आप आएंगे मीडियम प्रॉब्लम्स पे. ओके, एंड देन वहां से टाइम निकाल के आप जाएंगे डिफिकल्ट पॉइंट्स पे. That's the strategy that you're going to invoke while you're taking that paper, right? Are we good? Yeah. Okay. The second thing is don't rush. Of course, now this मैं बता नहीं सकता यार, ये कितनी इंपॉर्टेंट सी बात है कि that you don't have to really rush. Like अगर आप rush करने लगे जाएंगे ना इसमें, then you are essentially going to botch up your own chances of preparing in the examination. नहीं, और आप rush क्यों करते हैं ना, rush इसी वजह से करते हैं because you don't have a coherent strategy in place. आपके पास कोई strategy नहीं है. आपने मुश्किल क्वेश्चंस पहले पिक कर लिए और आपको बाद में पता चला अरे यार अब तो इतने ज्यादा क्वेश्चंस, इतना कम टाइम, अब क्या करें यार, जल्दी करो यार. और जल्दी करो मतलब गलतियां करो. They are synonymous, trust me. And I can tell you my personal accounts which I have heard from students from UMC कि कितने ऐसे गलत होते हैं कि भाई आता हुआ देखा नहीं क्वेश्चन, या आता हुआ किया नहीं बिकॉज इतनी जल्दी जल्दी में थे क्योंकि उन्होंने शुरू में मुश्किल क्वेश्चंस में टाइम स्पेंड करी. You don't do this. Then well, use clues के बारे में we have discussed this a lot. हमने बहुत बातें की है भाई. Well, you can do a lot of things like आप कैसे eliminate करते हैं options को, क्या करते हैं, like these are all things that we know about. So yeah, context-based memories. Now context-based memories is very important, right? Well, what we do in context-based memories is that, right, it's a fact, right? It's a scientifically proven fact that there are memories associated with place, things, and we generally tend to associate with events, place, things, people, happenings or spots or something like that. जैसे I'll tell you this, that आपको ऐसा लगता है कि आप उस जगह को भूल गए हैं जहाँ पे आप frequently जाया करते थे, और आप चले जाइए. जैसे आप उस जगह पे जाएंगे ना, then all the memories will come in flushing. अरे यार last time पता है क्या हुआ था, this friend of mine ना, he spilled a coffee or she spilled a coffee on someone, right? And we created a scene and we loved it, right? This happens, right? So psychological priming is a phenomena universally acknowledged. अब आपसे क्वेश्चन नहीं हो रही है, आपने elimination भी कर दिया. Try to recall that कैसे आपने ये क्वेश्चन पढ़ी थी, किस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ी थी, किसी टीचर ने पढ़ाया था, किस क्लासरूम में, ऑनलाइन में हुआ था, ऑफलाइन में हुआ था, किस टीचर ने पढ़ाया था, किसी बुक में देखा था.
कहाँ देखा था, अगर आपको वो बुक या वो टीचर या वो क्लास या वो कुछ याद आ गया ना, you'll be able to solve that problem, because आप सीधे से उस प्रॉब्लम में, उस क्लास में घुस जाएंगे और फिर आप उस प्रॉब्लम में घुस जाएंगे. तो try to identify this from context कि भाई ये क्वेश्चन कहाँ पे किया तो हुआ था यार, कहाँ पे किया था, याद करने की कोशिश करना. आपने अगर ये आइडेंटिफाई कर लिया कि कहाँ पे किया था, well, perhaps you'll be able to solve the problem. Yeah. The next point is, and the last point is that, well, you have to practice a lot. Yes, indeed, that's the point, my friend. आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना बेटर करेंगे एग्जामिनेशंस में. तो if you like, then it's like examinations जो practice करना है ना, it's like a coach, and this session there it's like nutritionist, right? If they work in conjugation, agar coach and nutritionist they work in conjugation, you will see that you see some extraordinary result, right? If the coach is great but the nutritionist isn't that great, मतलब आपका strategies अच्छी नहीं है but आपने तैयारी अच्छी की है, well, there will be results होंगे, but it will not be up to the expectation that it will not up to the level that you were expecting it to be, right? तो आप practice बहुत ज़्यादा करेंगे, that's a coach, that's a thing, that's entirely the thing that everything like this depends upon, right? Okay, now we'll go ahead and see that there are 3 A's that essentially govern where you will end up in life. It's just not about this examination, many things apart from that. First is attitude. The attitude that you will clear this examination, the attitude that you will work responsibly towards clearing this examination, the attitude that you will devote a disproportionate time for this examination, the attitude that you will be sincere in your course of study, the attitude that you will be able to do it, the attitude that I can is greater than IQ, and all of this coming together, and you'll find yourself that you're brimming with confidence, right? Then the next thing is aptitude. Now, aptitude is a very complex phenomena. A variety of factors can be attributed to it. So one, it could be, well, some part of it is innate, some part of it is cultivated. Cultivate kaise karte hain? By industriously working at our goals, right? That's the thing. And together combined, or ye jab dono combine karte hain, so, well, we have ability. Ability aa jati hai, right? So what this ability stands for, the ability to crack competitive examinations, the ability to go through most depressing phases of our life, the ability to come out of adversaries that life might subject us to, right? These 3 A's are very important. And finally, I'd like to sum this up in a word that I think that will be with you for the rest of your life. अगर मैं जितना कुछ बोला है ना, उसको मैं एक word में encapsulate कर पाऊँ तो it's this word called swear. S stands for screening. आपका question आए, सबसे पहले आप क्या करते हैं? Well, you screen the question, right? You try to think about the implications in your mind. आप अपने ज़हन में पहले सोचते हैं कि इसके implications क्या है? Like, does this stand for this? इसका मतलब ये भी होगा क्या? इसका मतलब ये भी होगा क्या? Okay. The second thing that you do is called winnowing. Winnowing means to separate the grain from the sand, like dust or grain को separate करने को winnowing कहते हैं, right? तो of course अगर आपके पास question आ रहा है ना, तो what you do is आप क्या करने वाले होते हैं? Well, आप ये करने वाले होते हैं कि आप सोचते हैं, अच्छा पहले आप सोचते हैं this way, oh no, discard it, खत्म. This way, oh no, discard it, खत्म. This way, oh no, discard it. What I'm doing is I'm separating the right from the wrong. तो मैंने wrong को पहले separate कर दिया. Okay, now this way, no, this wouldn't work. Oh, this wouldn't work. This wouldn't work. Winnowing. That's how we winnow it, right? Elimination. We have discussed about elimination at length. Length पे बात की हमने eliminations के लिए. आप questions के options को कैसे eliminate करते हैं 3-4 लोग इसके, right? Then the fourth is avert. Avert means that, okay, we avert all the dangers that have been led in the question paper. जो हमारे question paper में जो dangers लग दिए गए ना हर step पे, उनको हम avert करते हैं. There could be many dangers: overconfidence, complacency, lack of preparation, lack of sleep, lack of good food. अब exam के एक रात पहले आप सोए ही नहीं, आपने तैयारी करनी शुरू कर दी, तो you will obviously go to the examination hall and you will be in a state that cannot be described as sound, and it is going to affect your examination. So don't do this. Have a very sound sleep before examination.
Okay, and then finally rate, very important. Rate करने वाले हम किसको rate करने वाले? Well, our question paper and our OMR sheet. OMR sheet में हम देखने वाले हैं कि have we filled all the responses? क्या हमने सारे responses भर लिए? अगर भर लिए तो great, okay? और अगर भर नहीं भरे हैं तो हम चेक करेंगे कि हमारे कौन से responses missing हैं और हम उनको भरने की कोशिश करेंगे, okay? अच्छा, there is one more way that by which you can put a check. कि आप रफ में ना कुछ क्वेश्चंस के ऑप्शन लिख दीजिए, लाइक प्राइम नंबर्स 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 है ना, मतलब इन सब के आंसर्स आपने रफ में लिख लिए और जब आपने एमआर शीट पे आंसर्स मार्क किए तो इन क्वेश्चंस के आंसर आपने टैली किए कि भाई ये क्वेश्चंस के आंसर और ये क्वेश्चन यहाँ पे जो मैंने मार्क किया ये सेम है या नहीं, अगर है तो मोस्ट लाइकली आपने सारे क्वेश्चंस के आंसर सही मार्क किए, ओके? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड द रीजन व्हाई आई बिलीव there are few students जो पता है क्या करते हैं, who absolutely what they do is कि पहले वो 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फिर जाके उसको डार्क करेंगे. That's not a great strategy. In fact, I'll say that that can be very very hurtful. What if आपने 30 क्वेश्चन के आंसर किए और अब आप डार्क करने के लिए बैठे और टाइम खत्म हो गया, they have taken away your OMR sheet. Okay, you're done. Okay, so you can't do this. Okay, so that's about rate. Finally, you must have these 3 C's in you. Calmness, to go through the question paper with a calm attitude. If you have labored enough, if you have the right strategy, you will be calm enough, right? Carry the, and which will essentially translate into confidence. And keep in mind that at all the times during the test, you have to concentrate on the paper. It can't be so कि भाई अभी तो हम बहुत अच्छे से दे रहे हैं, oh this is my cat, I'm so sorry, and अभी तो हम बहुत अच्छे से दे रहे हैं exam and उसके बाद नहीं भाई इतनी देर के बाद हो गया. Don't do this, right? Okay, don't do this. So now these are the various ingredients which essentially help you in acing the examination, if I could say that. Now I'll leave this floor open to any question that you might have for any examination that might be. It could be regarding the examinations that you're about to take. It could be regarding JEE. It could be regarding Olympiads. It could be regarding a career in mathematics that you want to pursue, right? Yeah. Thank you so much, sir, for such a valuable and insightful session. I hope students are well prepared and better prepared to attempt any of the MCQ-based Term 1 examinations. We are flooded with a lot of questions, and before we take the questions, I request all the students to please fill the feedback form which is there in the chat box. Chat box के अंदर हमने feedback link आपको provide किया है. सभी participants students से request है कि उन्हें भरिए ताकि हम आपको certificate, e-certificate provide करा सकें इस master class का. So chat box में the link is there. I'm sharing the link again. Yes, so let's start with the questions. Sir, a lot of students are asking why are we, why can't we use gel pen or pencil in the OMR? So if you can reiterate. Yeah. So the idea behind not being allowed to use pencils is pencils इसलिए नहीं बोला जा रहा आपको use करें because it's open to using unfair means. नहीं कि आपने कुछ responses mark किए, let's say उसमें से कुछ responses गलत थे, and you have someone, a collaborator inside the school, they can take your MR sheet, erase the wrong options, fill in the correct ones, and submit it again. So this is open to you being used, right, and being manipulated in a way that it will affect the result of the people concerned. So that's why not pencil. Gel pen perhaps because gel pen का जो impressions होते हैं, they're not long lasting, right? And उस OMR sheet पे long lasting impressions चाहिए because they have to be read by a machine which will only read your option if it doesn't allow the light to pass through it, right? So therefore the ball pen, and in fact आप देखेंगे that ball pen is a bit dense than gel pen, even it can be observed in common practice, right? So that's that. So one of the student is asking if I have highlighted, if I have marked the circle, the responses, and forgot to mention, the option in the boxes, will it get considered? No, which I explained towards the
beginning of this class that अगर आपने सिर्फ boxes darken किए हैं और response sheet में response box में आपने option नहीं लिखा है, well sorry, the question will be considered as unattempted. समझा जाएगा आपने question को attempt नहीं किया है, right? So some of them are asking, while writing the option in the box, it should be in capital letter or small letter. Yeah, it should be in capital letter. Yeah, indeed. Okay. One of the student is asking, can we use pencil or gel pen on the question paper, or are we, and some of the students are asking, are we getting some extra sheets in the question paper so that we can do rough work? Yeah, so that's a good question. And I'll say that, in fact, question paper ke liye to carry a pencil. And why I'll say that, what if there is a limited amount of extra rough sheet that will be provided by the school that you're sitting in? Agar rough sheet jo wo provide kar rahe hain, wo limited hai, aur aapka rough work exceed kar raha hai, so it's better to do with a pencil on the question paper. Aap pencil se karna, take an eraser with you, fir usko rub kar dena, right? So what it will do is that it will give you replenishable space in which you can do your calculations over and over again without even thinking about the space constraints twice. So it's highly recommended that you carry a pencil with you and for just rough work, okay, for just rough work. Yeah. Ratika is asking, would CBSE provide an OMR for 11th class also? So no, the school will provide you the OMR for your examinations. Okay, so rough sheets and okay. So one of the student is asking, I'm interested, in opting and pursuing PCMB after his class 10, because he's in class 10th. He's keen to take PCMB in class 11th. Yeah. What are the benefits? Because he's not very clear about PCMB, so he's asking, as an expert, please advise what are the positives and negatives, pros and cons of PCMB. No, I'll tell you the pros. In fact, I'm going to tell you that perhaps you're going to do, perhaps the thing that you're going to opt for, and if you consider that very seriously, you'll go very far in your life. So I'll just give you a brief background. So there is a student, Ria Goel, at Gurgaon Center. She has opted for PCMB and one of few students, right? So generally students harbor this phobia that we can't carry biology along with mathematics. Well, I'll tell you something. During my master's, I took a course called Mathematical Programming, and I was taught that course by Dr. David Papp, who was working on cancer research stem cells, right? Now, what mathematics has got to do with cancer research, right? So you will eventually realize that, आपको ऐसे पता चलता है ना एक time के बाद that everything in fact is mathematics, right? When you grow up, you'll find that there is a very special program, which is common between two universities, Harvard and MIT, which just take engineers, those who have mathematical background, and then they produce doctors. Now think of this. अब ऐसे सोचो, you become a doctor and you have to test the efficacy of a vaccine, right? How do you do that? आप कैसे करने वाले हैं? Not by using biology, by using statistical methods, right? And unless you are acquainted with statistical ways, you will not be able to know that whether a vaccine in the given circumstances is an effective measure, right? Okay, let's leave it here. हम थोड़ा और आगे जाते हैं. So in fact, I'll encourage you to search for that program, which is a hybrid between engineering and medical sciences, but that only takes people who have a mathematical background, and that's a unique course in Harvard and MIT, right? तो आप जाते हैं maths वाले लोग लेते हैं और produce करते हैं doctors को. And I'll say this with great confidence कि अगर आपको biology की field में बहुत अच्छा करना है, you should be great in mathematics. Now you should be great in mathematics. हर कुछ जो आप देख रहे हैं, everything that you see, every statistical analysis underlies on the foundations of mathematics, right? So I hope that answers your question. And I'm saying this with great confidence that many people, like I'll take the name, right? So you can search this name, R.A. Fisher, right? After I'm done with this presentation, search the name R.A. Fisher, R.A.F.I.S.C.H.E.R. Almost shark-like structure in statistics. He was a biologist to begin with, right? So the point which I'm trying to make is that there is an intricate connection between mathematics and biology and statistics. And if you want to excel in biology, if you want to tower over your peers, well, choose mathematics as well. Yeah.
Great. Another question is, one of the student is asking, like, for example, will be allotted with 60 questions in the question paper, and we have to attempt 45 out of them. So do we need to circle the hash, circles 15 times, just to mention that we are avoiding, or we are not attempting 15 questions out of it, or or shall we keep it, empty? No, so like if you leave that empty, अगर आप उसको empty छोड़ देते हैं, तो of course that will be considered that, excuse me, you haven't answered the question. Okay, अगर आपने ना circle dark किया, excuse me, ना box में कुछ लिखा, ना hash वाला column में कुछ लिखा, it will be considered that you have left the question aside. But the ideal protocol demands that you should darken the bubble against the hash column, right? और इससे आपका ही फायदा है, because आपको पता चल जाएगा ना कि आपने सारे questions attempt कर लिए. Right. So right. A very important question, asked by one of the students, is saying, sir, when is the best time at the period of examination to mark OMR sheets? Yeah. So when to mark? Yeah. So this is a great question. I'll say that at most 2 से 3 क्वेश्चन करने के बाद mark your answers. Okay, don't leave it कि भाई 10 क्वेश्चंस करने के बाद आप मार्क करोगे या 30 क्वेश्चन करने के बाद मार्क करोगे. I'll tell you क्या पंगा हो जाएगा. एक तो पंगा ये कि आपने कर लिया और टाइम ही खत्म हो गया. दूसरा ये कि आप सोचो, आप 10 क्वेश्चंस मार्क करने चले, थर्ड क्वेश्चन के बाद ना आपने गलत मार्क कर दिया. अब पता है क्या होगा? अगर आपने 4 का ये मार्क किया ना, तो अब 5 में आप 6 का आंसर मार्क करोगे, 6 में 7 का आंसर मार्क करोगे, 7 में 8 का आंसर मार्क करोगे, उसके आने वाले बाद सारे आंसर्स आपने गलत मार्क कर दिए, राइट? सो I think that this is such a bad experience, and this is such a bad strategy to mark so many answers in clusters. I'll rather recommend, मैं तो recommend करूंगा कि एक के बाद एक मार्क करो. और अगर आपको ये convincing नहीं लगता है, तो at best 2 से 3 आप करिए और 2 से 3 मार्क कीजिए. That will be it. So one of the students is asking, let's say we have 60 questions, and out of which we have to attempt 45. Yes. I have already attempted 45. Then I realized there are a couple of questions which I am good at. So, while answering in the box, can I, unattempt that by, bubbling it in the hash column? So he's, she's asking, अगर मैंने 45 क्वेश्चंस ऑलरेडी अटेम्प्ट कर लिए हैं और उसके बाद 2 क्वेश्चंस में मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं, तो क्या मैं उनको हैश को बबल करके उसको अनअटेम्प्ट दिखा सकती हूं और मैं बाकी वो 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकती हूं? So the ideal way would be that first of all you will have to strike the answer, the response that you have filled inside the box. पहले तो सबसे पहले आपको बॉक्स के रिस्पांस को स्ट्राइक करना होगा, बिकॉज अगर आपने सोचे ना, अगर आपने तीनों कॉलम फिल कर दिया, आपने ओवल भी फिल किया, बॉक्स भी फिल किया और सर्कल भी फिल किया, the question will be taken as attempted, right? So the first thing that you should do is that strike that option off. पहले वो क्वेश्चन जो बॉक्स में आपने लिखा वो हटा दीजिए, then mark that question as unattempted, फिर आप उस क्वेश्चन को unattempted मार्क कर लीजिए, and then proceed on to solve the problem that you originally wanted to, right? That should be a better way to go about it. Yeah. Also, I would like to add, please read all the questions carefully and segregate it with easy, medium and difficult. जो EMD सर ने आपको एक मंत्र बताया था, आप उसको फॉलो कीजिए. इजी, मीडियम एंड डिफिकल्ट जब आप उसको सेग्रीगेट कर लेंगे, सो आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे उन क्वेश्चंस को लेके, और आप जब OMR फिल करेंगे तो यू आर वेरी कॉन्फिडेंट कि आपको जो आते होंगे क्वेश्चंस 45 वो आप दे सकते हैं, मार्क कर सकते हैं. द क्वेश्चन, द टाइम लिमिट फॉर द एग्जामिनेशन इज 90 minutes. You have to attempt all the questions in 90 minutes. So, sir, we are flooded with a lot of questions, though, because of the paucity of time, we have already extended, 20 minutes of the session. So we have to culminate the session. Sure. So I would like to thank you for your valuable time, your precious time,